Okay, so today we are going to start with a new and very interesting topic. That topic is diffraction basically. तो बहुत interesting है ये, and you can actually measure the length of the thickness of not length of the thickness of your own hair using this concept of diffraction. क्योंकि आपका जो हेयर है उसका थिकनेस बहुत कम है, तो व्हाट हैपेंस इज नॉर्मल स्केल यूज नहीं कर सकते, वर्नियर कैलिपर भी यूज नहीं कर सकते, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक हेल्प ऑफ लाइट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, और उससे भी कुछ पतला रहा तो भी चलेगा बेसिकली. By the way, before we go into applications, and unfortunately that is not part of the syllabus, application syllabus में नहीं है आपके, but anyways I will just take one example. But before that I should tell you what is concept of diffraction, and concept of diffraction is a very interesting and a simple thing. For example, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक source of light है. So we have a source of light sitting over here. Then हमारे पास एक screen है. We have a screen, let us say. So मान लेते हैं ये एक screen है हमारे पास, right? And source of light और screen के बीच में अगर if between this source of light and the screen if we have let us say an obstacle, तो पहले screen draw कर लेता हूँ मैं अच्छे से. So here you have a screen, और इन दोनों के बीच में अगर मैंने एक obstacle रख दिया, obstacle मतलब जो लाइट को ब्लॉक करेगा. तो मान लो ये एक obstacle है. Assume that you have an obstacle. तो what we expect is light travel कैसे होगा, right? So light will go from this source, यहाँ जाएगा, and from this source and in this direction it will travel here. Okay, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है that ये जो region है on the screen, जो मैंने स्क्रीन दिखाई है एंड उसमें जो रीजन है, लेट मी गिव सम नेम्स टू इट. तो मान लेते हैं let us say this point over here is A point, this point over here is B point, ये है A dash, ये है B dash, and as you know this is screen. तो ये जो A dash B dash जो रीजन है स्क्रीन का, वी डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे लाइट आएगा. तो ये जो रीजन है that is called as geometrical shadow region, because we don't expect light to enter here. So this region A dash B dash is geometrical shadow region, right? और A dash के ऊपर this region is illuminated with light, so this is illuminated region, क्योंकि लाइट वहां पे जाएगा. ए भी ऑब्स्टेकल है, तो हमने लाइट को ब्लॉक करने के लिए एक ए भी कुछ रख दिया है वहां पे. इट कैन बी अ पेंसिल, इट कैन बी अ प्लेन ऑफ पेपर, it can be anything. Okay, so we expect the light will be blocked and light will not reach A dash B dash region, मतलब geometrical shadow region बनेगा. A dash के ऊपर और B dash के नीचे you will have illuminated region. So here you get these two are illuminated region, right? Okay, so but ऐसा भी तो हो सकता है कि we place a slit. यहाँ पे obstacle की जगह पे हमने slit रख दिया. मतलब what I am saying is this. For example, हमारे पास एक source है यहाँ पे. We have a source of light. Actually, I should be showing a point source, but it's okay. तो हमारे पास एक source है. And where is eraser? Here. So I'll just remove this for the time being. तो हमारे पास source है. Almost same thing I am doing.
ओके, देन सोर्स है एंड देन वी प्लेस अ स्लिट, और हमने यहाँ पे स्लिट लगा दिया. सो वी हैव अ स्लिट ओवर हियर. देखो ऑब्स्टैकल लाइट को ब्लॉक करेगा और स्लिट जो है वो लाइट को अलाउ करता है पास होने के लिए. तो वी प्लेस अ slit, but the slit, let me keep it like this over here. तो ये एक स्लिट है, and you know what is slit? Slit is a small opening basically. Anyways, let me just complete this figure and then we can go ahead with explanation. Okay, perfect. Yeah. तो अगर ऑब्स्टैकल की जगह पे अगर हमारे पास स्लिट होता तो उस केस में लाइट एक्चुअली विल बी अलाउड टू पास थ्रू स्लिट, और जो सेंटर पे जो रीजन बनेगा दैट विल बी एक्चुअली इल्यूमिनेटेड रीजन. सो यू विल हैव इल्यूमिनेशन ओवर हियर, right? So let me again give some names to it. So let me say this is over here, you have point A, over here you have point B, this is A dash B dash. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऊपर और नीचे, ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे जो है वो जियोमेट्रिकल शैडो रीजन है, और जो ए डैश बी डैश है दैट इज इल्यूमिनेटेड रीजन. तो इन दिस केस वी हैव द अदर वे अराउंड, and ऊपर again here you have geometrical shadow region GSR, right? तो this is what we normally expect. हम normally expect क्या करते हैं, that light travels in a straight line, okay, and it produces shadow region if it is blocked. अगर light किसी object से block हुआ, if there is obstacle in the path of the light, then it generates geometrical shadow region, okay. Similarly अगर light एक स्लिट से पास होगा तो सेंटर में जो है वो इल्यूमिनेशन होगा, और ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे देयर विल बी नो लाइट, सो यू विल गेट ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन्स, ओके. बट डिफ्रैक्शन मतलब क्या? अब डिफ्रैक्शन मतलब अगर ये जो ऑब्स्टैकल है फिगर ए में, जो हमने ऑब्स्टैकल दिखाया है, और फिगर बी में हमने स्लिट दिखाया है, तो ये जो ऑब्स्टैकल है ए बी, या फिर जो स्लिट है ए बी इन फिगर बी, if the sizes of this obstacle and slit, if they are so small that they are comparable to wavelength of light. For example, what is wavelength of light? मान लेते हैं कि मैं येलो कलर का लाइट यूज कर रहा हूँ, तो अराउंड 6000 एंगस्ट्रॉम. 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 into 10⁻⁷ मीटर. इतना छोटा अगर कोई ऑब्स्टैकल है हमारे पास, राइट, इतना छोटा कोई ऑब्स्टेकल है या फिर स्लिट है, तो उस केस में होता क्या है, द लाइट बेंड्स एट द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल. तो जहाँ जहाँ पे एज मिलेगा लाइट को, लाइट वहाँ बेंड होगा एंड लाइट विल एंटर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड the wavelength of light and size of the obstacle or slit, they are comparable, then light ray, instead of going in a straight line, it bends like something like this. तो ये जो ग्रीन में दिखाया है मैंने, that is bending of light. So the light bends actually and light enters geometrical shadow region, okay. or or you can say that अगर स्लिट होगा तो लाइट स्प्रेड्स, तो लाइट bends or it spreads and it enters geometrical shadow region, that is what you call as diffraction. तो diffraction मतलब क्या? The bending of light. कहाँ पे bend हुआ? Around the edges. किसके edge? Around the edges of obstacle or slit, right? So the bending of light around the edges
of obstacle or slit and spreading of light into the region of geometrical shadow is called as diffraction. So सिंपल लैंग्वेज में हाउ वी हैव डिफाइंड इट, हमको डिफाइन करने के लिए हमने इनिशियली बोला था कि अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल ए बी है, सोर्स एस है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगा, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होने की वजह से ए बी ऑब्स्टेकल ने जितना लाइट ब्लॉक किया उसकी वजह से ए डैश बी डैश एक ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बनेगा स्क्रीन पे. सो हियर वी हैव स्क्रीन्स, so here we have screens for both cases. So what we expect is that the light will go straight and it will make geometrical shadow region and illuminated region. So A dash B dash in the first case A figure is geometrical shadow region. In the second case it is other way around. Second case में क्या है कि the light is illuminated between A dash and B dash and it is basically there is no light above A dash and below B dash. तो ऐसा केस है, right? Okay. Then if the size of obstacle or the slit, if they are comparable to wavelength of light, जैसे wavelength of light is in few, you can say it is micrometer, या फिर आप बोल सकते हो 10⁻⁻7 मीटर. अगर हमारे पास जो ऑब्स्टैकल या स्लिट है उसका साइज इतना छोटा है विच इज कंपेरेबल टू द wavelength of light, then in that case light bends around the edges and it enters geometrical shadow region shown by this green colored ray. तो लाइट बेंड हो जाता है. तो हमने डिफाइन कैसे किया डिफ्रैक्शन को इजी लैंग्वेज में? हाउ कैन यू डिफाइन इट? द बेंडिंग ऑफ लाइट around the edges of obstacle or slit and it enters in the region of geometrical shadow. This concept is called as, this phenomenon is called as diffraction. Simple tha, right? Good. So whatever we have learned so far, we'll quickly put it down in the form of notes. बहुत easy है ये concept. You just have to understand and write, और कुछ भी नहीं है. तो from where did we start everything? हमने start किया था by saying, just a minute, let me just align this. Good enough. So we started by saying light travels in a straight line, travels in a straight line and produces shadow if an obstacle if an obstacle is placed in its path, is placed in its path. Refer to figure A. Right. Or similarly light spreads. Light actually doesn't spread, but similarly if you have a slit, similarly if light from a source S is allowed to pass through a narrow slit, is allowed to pass through a narrow slit, and narrow slit in our case is AB. हमने ये फिगर B से दिखाया है. Similarly, if the light is allowed to pass through a narrow slit AB, you may refer to figure B here. Okay, only the part A dash B dash, only the part A dash B dash, and I don't know how to put dash in this, so I'll just mark it with my hands. A dash and B dash.
right? So only the part A dash B dash gets illuminated. Only the part A dash B dash gets illuminated on the screen. But no light will enter a region, but no light will enter geometrical shadow region. Okay, this is where the concept of diffraction comes into effect. Now ये हमको इतना पता है कि ऐसा होगा, लाइट ब्लॉक हो जाएगा या फिर लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन में जाएगा और बाकी जगह पे नहीं जाएगा. जहां पे लाइट नहीं गया, दैट इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. This is normally what we know, but diffraction starts from here. When the size of obstacle or slit is small and comparable to the wavelength of light, to the wavelength of light, then light bends near the edges. Let me just go to the next page. Then light bends around the edges of the obstacle or slit and enters in the region of geometrical shadow. So this concept is nothing but, this concept is called as diffraction. So we will now formally define what is diffraction. So let us define diffraction. जो आपने अभी तक लिखा है वही diffraction है, तो सिर्फ उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है. क्या हुआ? लाइट बेंड हुआ. कब बेंड हुआ? जब when it encounters the edges of an obstacle or slit. और उसके बाद बेंड होने के बाद क्या हुआ? The light entered region of geometrical shadow, that is known as diffraction. तो easy है. The bending of light near the edges of an obstacle or slit and spreading into the region of geometrical shadow is known as diffraction. तो you can easily define diffraction, कुछ है ही नहीं यहाँ पे. Now अगर आपको diffraction समझा है तो आपको ये अब समझा होगा. इफ आई मूव बैक टू द लास्ट स्लाइड, और अगर आपको डिफ्रैक्शन समझा है तो डेफिनेटली आपको ये समझा होगा कि व्हाट यू नीड टू हैव डिफ्रैक्शन. आपको एक डिफ्रैक्टिंग सिस्टम चाहिए. व्हाट इज डिफ्रैक्टिंग सिस्टम? यहाँ पे जो ऑब्स्टैकल है ए बी वो, या जो स्लिट है ए बी वो, दैट इज अ डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. जो कोई भी लाइट को डिफ्रैक्ट करेगा, मतलब जो कोई भी लाइट को बेंड करवाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, राइट? तो ओवरऑल व्हाट डू यू नोटिस हियर? आपके पास तीन चीजें हैं. एक है सोर्स ऑफ लाइट, एक है डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. अब मैं ऑब्स्टैकल
और स्लिट नहीं यूज करूंगा. आई विल से डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. डिफ्रैक्टिंग सिस्टम कैन ईदर बी an obstacle or it can be a slit. So in general, diffracting system. So what you see from figure A or B is that you need three things. One, you need a source of light, you need a diffracting system, and you need a screen to have a diffraction pattern. By the way, ये जो लाइट बेंड हो रहा है अराउंड द कॉर्नर्स और एजेस, ये जब स्क्रीन पे जाएगा तो ये एक पैटर्न बनाएगा जैसे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना था. इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वेरी सून. राइट, you will come to know how does a diffraction pattern looks like. So you will know that. Anyways, but what are the requirements? You need these three things. तीन चीजें चाहिए: source, diffracting system और screen. अब depending on the distance of the diffracting system from the source and the screen, we can define different types of diffraction. तो हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं जस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. अगर डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब ए बी का डिस्टेंस सोर्स से और स्क्रीन से इन्फिनाइट है, देन सच अ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे. राइट, गुड. एंड हम लोग बाद में कंपेयर भी करेंगे उसको. राइट, देन अगर डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से सोर्स का डिस्टेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस फाइनाइट है, फाइनाइट दैट यू कैन मेजर बेसिकली, then such diffraction is called as Fresnel diffraction. Right, so you need to know this. Two types of diffraction just depending on the distance. If the diffracting system मतलब obstacle या फिर slit, इसका डिस्टेंस सोर्स से और स्क्रीन से इन्फिनाइट है तो हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. अब इन्फिनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? इन्फिनाइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है that the wavefront falling on the diffracting system AB should be a plane wavefront. आपको पता है ना, सोर्स अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हुआ तो स्पेरिकल वेव फ्रंट भी अगर होगा तो उसका छोटा सा पार्ट आने वाला है, मतलब वेव फ्रंट विल बिकम अ प्लेन. और स्क्रीन पे भी जो वेव फ्रंट जाएगा आफ्टर डिफ्रैक्शन बेंड होने के बाद वो भी प्लेन होना चाहिए. राइट, गुड. तो इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली इन रियलिटी? हमने सोर्स को रख दिया दिल्ली में, हम लोग बैठे हैं डिफ्रैक्टिंग सिस्टम लेके धुले में, और हम लोग स्क्रीन रख के आए चेन्नई में. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को समहाउ वी हैव टू कन्वर्ट दैट स्फेरिकल वेवफ्रंट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इनटू अ प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का. ये सब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखने वाले हैं, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड नाउ. तो व्हाट वी कैन डू इज, हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जस्ट वन रिक्वायरमेंट है, एंड दैट वन रिक्वायरमेंट इज दैट कि हम लोगों को डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे जो वेव फ्रंट होगा और स्क्रीन पे जो वेव फ्रंट होगा बोथ शुड बी अ प्लेन वेव फ्रंट. तो हम लोग इसलिए यहाँ पे रख देते हैं लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस दोनों जगह पे. राइट, व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज हमको पता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस ये स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है. मैंने पहले भी बताया था, और जो हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली डिफ्रैक्शन दैट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल. ओके, हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे उसको, तो आपको समझेगा दैट व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन a pair of convex lens is required, biconvex lens is required, right? In Fresnel diffraction, the distance of the diffracting system, from source and from screen, they are finite. So we don't need any special lenses or anything. Right? That is simple. जो आप अपने घर में भी एक रूम में भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है फ्रेस्नेल का without any special requirement of lens. So that is the basic difference. So only difference is
the type of wavefront falling on diffracting system and on the screen, इतना ही difference है. So we will study this in comparison now. So diffraction we can have of two type, Fraunhofer and Fresnel. Right. So types of diffraction. So the diffraction phenomenon can be broadly classified into two types. Diffraction can be broadly classified into two types as follows. I like this in a way of comparison. So I really want this to be in the form of a table. तो easy होता है समझने में. So let's do it in this way. Oops. Just a minute. Okay. So we will be doing a comparative study of both because it is easy to do a comparative study. All right, and should go straight. Right. And because I don't like empty spaces, so diffraction can be broadly classified into two types. One is Fraunhofer, और हम लोगों को Fraunhofer diffraction जो है वो डिटेल में देखना है. Fraunhofer diffraction, and second is Fresnel diffraction. Fresnel diffraction. For our case, only one diffraction, and that is basically, yes, as I told you, we will be just looking at Fraunhofer diffraction in detail later on. तो हम लोग जस्ट Fraunhofer diffraction जो है वो बाद में डिटेल में देखेंगे. So Fraunhofer diffraction, and then it should be placed over here. And you will have Fresnel diffraction. Fresnel diffraction. Okay. The only thing that I told you is दोनों में एक ही डिफरेंस है, जस्ट वन डिफरेंस है. बट ये एक डिफरेंस जो है इसको आप 3-4 पॉइंट में लिख सकते हो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज द ओनली डिफरेंस. द सोर्स ऑफ लाइट and the screen are both at infinite distance from the diffracting system. That is the only difference here. So first point, the source of light and the screen
are effectively at infinite distances from the diffracting system. Now diffracting system I already told you, ऑब्स्टैकल या स्लिट दोनों को कॉमनली हम लोग नाम देते हैं डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, राइट? ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, द वेव फ्रंट falling on the diffracting system as well as the screen is a plane wavefront, is a plane wavefront, right? इसका मतलब क्या? that we cannot have such things, okay? possible नहीं है. we cannot have, as I told you, source दिल्ली में जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ पे डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, और चेन्नई में जाके रखे हैं हम लोग स्क्रीन, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हम लोगों को प्लेन वेवफ्रंट को, मतलब स्पेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड कॉन्वेक्स लेंस, एंड वी नीड टू कॉन्वेक्स लेंस. एक सोर्स और स्क्रीन के, एक सोर्स और डिफ्रैक्टिंग सिस्टम के बीच में होगा, दूसरा डिफ्रैक्टिंग सिस्टम और स्क्रीन के बीच में होगा. अ पेयर ऑफ convex lens, I'll write it in a complete way, since it is practically not possible to have infinite distances, a pair of convex lens. जब मैं कॉन्वेक्स बोलता हूँ तो बायकॉन्वेक्स की बात चल रही है, यहाँ पे दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होंगे. a pair of convex lens is required to convert spherical or cylindrical wavefront, spherical or cylindrical wavefront into a plane wavefront, into a plane wavefront, right? तो बहुत easy है ये, it is extremely simple thing. Okay, if it is going out of the box, I have to reduce the size little bit. बहुत छोटा हो गया. Okay, doesn't matter. Okay, so we'll see later on. हाँ, just a minute. So I'll just remove spherical word because not cylindrical word, because normally जो source हम लोग use करते हैं वो point source होता है, and the point source basically gives us a spherical wavefront, right? So what we will write in Fresnel then? अभी Fresnel के केस में what we can write? Simple, जैसे मैंने बताया यहाँ पे the source of light and the screen are effectively at finite distances. The source and the screen are at finite distances from the diffracting system. Second, the wavefront falling on the diffracting system is either, diffracting system as well as screen is either a spherical hollow plane wavefront or a cylindrical wavefront. तो यहाँ पे we don't need actually plane wavefront. The wavefront falling on the diffracting system and the screen is either
spherical or cylindrical, right? And here we don't need any lenses, right? No, we no need of convex lenses. ओके, तो इतना सिंपल सा ये केस है. इट इज क्वाइट सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. So we just have listed point by point what is the difference between Fraunhofer and Fresnel. Okay, तो effectively, so these are the basic points of differentiation between Fraunhofer and Fresnel diffraction. If you want आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो. डायग्राम में करना क्या होगा, वैसे बाय द वे एक डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं आगे फ्रॉनहोफर के लिए. सिर्फ आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे दो लेंस दिखाने होंगे जैसे मैंने पहले दिखाए थे. सो यू विल हैव टू पुट अ लेंस ओवर हियर एंड अ लेंस ओवर हियर. तो ये लेंस ड्रॉ करना है, फिर आपको दिखाना है कि लेंस क्या कर रहा है. लेंस क्या करता है बेसिकली यू ऑलरेडी नो. लेंस क्या करता है, जो रे ऑफ लाइट है इसको इसको कन्वर्स कर देगा, मतलब स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऐसा दिखाना है, राइट. एनीवेज दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एंड व्हेन नीडेड हम लोग करने ही वाले हैं. ओके, सो वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है. जस्ट पार्डन मी फॉर माय स्पेलिंग मिस्टेक्स बिकॉज while टाइपिंग हो जाता है ये. ओके, देन as far as your syllabus is concerned, हमको डिटेल में सिर्फ एक टाइप का डिफ्रैक्शन देखना है, दैट इज फ्रॉनहोफर. मतलब यू नो दैट द सोर्स एंड द स्क्रीन मस्ट बी इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब हमको लेंस यूज करने पड़ेंगे. एंड हमको देखना है डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्लिट? अगर मेरे पास एक सोर्स था, सो यू ऑलरेडी नो इफ आई हैव अ सोर्स हियर, अब मैं यहाँ पे तो जितने स्लिट चाहूँ उतने रख सकता हूँ. वन स्लिट, टू स्लिट्स, एन स्लिट्स. आई कैन कीप एन नंबर ऑफ स्लिट्स. ओके, बट what we are going to study for the time being, n number of slits जो है आपको इंजीनियरिंग अगर आप करोगे तो तब आएगा. so diffraction pattern due to n slits वो आएगा आपको इंजीनियरिंग में, and you have experiment related to that if you do engineering in future, right? okay, so फॉर द टाइम बिंग हम लोगों को सीखना है व्हाट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट. ओके, ड्यू टू अ सिंगल स्लिट. so let's see what is Fraunhofer diffraction due to a single slit. तो we'll go in details first. लिखने का काम हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग पहले देख लेते हैं what is this thing. तो आइडिया इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. what we have is a single slit. तो पहले तो एक सिंगल स्लिट आप दिखाओ. ये डायग्राम बाय द वे इट इज हाफ कंप्लीट. इसको पूरा कंप्लीट करना है तो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस. ओके, तो इट्स ओके इफ यू इवन इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है. so you have a single slit. let me just align it properly. if not properly aligned हमको angles define करने हैं, we cannot do it. okay, anyway, so what I'll do is use a thicker line so it's easy to align properly. better, yeah. now हमारे पास एक सोर्स है
जो या तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है या फिर सोर्स के आगे लेंस लगाया है। तो व्हाट इज हैपनिंग, वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से जो रे आ रहा है, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यू हैव अ रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट कब होता है, यू शुड नो दैट कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कब होता है, व्हेन यू हैव ऑलरेडी यूज्ड अ लेंस। तो ये जो लाइट का रे है ये ऑलरेडी लेंस से पास होके आया है, so it is already coming from a lens। मतलब एक सोर्स होगा, उसके आगे एक लेंस रखा था, उस लेंस ने क्या किया, जो डाइवर्जिंग रेज थे मतलब जो स्पेरिकल वेव फ्रंट था उसको प्लेन में कन्वर्ट करके भेजा है। सो देयर इज सम लेंस ओवर देयर, मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पे बिकॉज वी नीड स्पेस टू कंप्लीट आवर डायग्राम। ओके, तो these are set of parallel rays coming and I am just extending this particular ray, क्योंकि मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ इसको। why, you will know। Okay, then as I told you, there has to be a screen। वहाँ पे एक स्क्रीन होना चाहिए, तो let me make a screen over here। तो this is a screen that you have over here। ये जो स्लिट है इसको हम नाम दे देंगे ए बी बाद में। देन एज आई टोल्ड यू कि दो लेंस लगते हैं, एक सोर्स के बाद लेंस था, उस लेंस ने ये जो रेड कलर के रेज आ रहे हैं इसको ऑलरेडी पैरेलल करके भेजा है। आई एम नॉट शोइंग इट। ओके, एनीवेज, नॉट टू हैव कंफ्यूजन, मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे एक लेंस था और लेंस ने उस रे को पैरेलल कर दिया, और दूसरा लेंस होगा आफ्टर दिस डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, मतलब आफ्टर द स्लिट। तो दूसरा लेंस यहाँ पे है, यू हैव वन लेंस ओवर हियर। यस, दोनों लेंस का फोकल लेंथ अलग होगा बिकॉज दोनों लेंस का पर्पस अलग अलग है। एक लेंस जो है वो रेस को कन्वर्ट करके मतलब स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन में कन्वर्ट करके डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब स्लिट पे लाएगा, दूसरा जो है स्लिट से जो रेस डाइवर्ज हो रहे हैं उसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे लाएगा। तो फोकल लेंथ कैन बी डिफरेंट। ओके, एनीवेज, देन इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच, आपको ये समझना जरूरी है दैट जो भी रेज जो भी रेज जो सेंट्रल रे है, लेट मी गिव द नेम टू दिस नाउ क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्लिट ए बी। इस स्लिट का विड्थ, स्लिट का ओपनिंग, उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट विड्थ, इस स्लिट का ओपनिंग जो है दैट इज ए। सो विड्थ ऑफ द स्लिट इज स्मॉल ए, राइट? Okay, then you have a screen which is XY। The ray passing through the center of slit, मतलब passing through some point at the center, let us say C point at the center, will go without bending and it will reach the center of the screen which is, let us say, P0। So P0 is the center of the screen, right? देखो, according to what we have learned from Huygens principle, Huygens principle ने वो क्या बताया? Every point on a wavefront acts as a secondary source। This is really important। अगर ये नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा। Every point on a wavefront acts as a secondary source। इसका मतलब जो ए बी स्लिट पे जो wavefront आया है, let me draw this wavefront with some different color so that you will understand in a better way। तो ये जो ए बी स्लिट पे जो wavefront आया है, ये जो रेज आ रहे हैं ना, पैरेलल रेज आ रहे हैं, मतलब क्या रेज आ रहे हैं का मतलब ये होता है कि वेव फ्रंट आ रहा है बेसिकली। ओके, सो दिस वेव फ्रंट, this particular wave front, goodness, sometimes it becomes so difficult to draw things। Anyways, we'll manage, good enough, right? So the idea is this wave front which is arriving at the slit, the one I have shown in green,
every point on this wavefront will act as a secondary source. हर एक point secondary source act करेगा and it will start emitting its own light. Okay, then some of the rays coming from the secondary wavefront which are parallel to CP0, मतलब जो सेंटर से जो रे जा रहा है CP0, इसको जो रेज पैरेलल होंगी they will reach the point P0. तो उसका पाथ कैसा होगा? उनका path will be something like this. So the path of that ray which are parallel to CP0 will be something like this. So they will reach the lens over here. लेंस पे आए, देन लेंस पे आने के बाद पहले मैं लेंस तक तो ले जाऊं, देन लेंस पे आने के बाद they will bend because that is what a lens does. So they will bend and reach center of the screen, that is point P0. दोनों साइड से, on both sides they will bend and reach the point P0. And these rays which are reaching point P0, they have practically traveled same path or equal paths, right? So what I am telling you is ये जो rays of light थे, मतलब this one, ये वाले जो CP0 को पैरेलल थे, जो CP0 को पैरेलल थे वो लेंस से पास होने के बाद वो बेंड होंगे, और बेंड होने के बाद बेसिकली they will reach a point P0 since they have traveled इक्वल पाथ ट्रेवल किया ना दोनों ने, ऊपर का रे और नीचे का रे देखो विच आर पैरेलल टू CP0, दे हैव ट्रेवल्ड इक्वल पाथ टू रीच P0. जब पाथ डिफरेंस नहीं होता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन हियर, राइट? ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज करना थोड़ा संभाल के यूज करना है आपको. व्हेन आई से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्रैक्शन हियर. तो जो लाइट बेंड हुआ है वो बेंड होके these rays which are bending this rays will reach at a point on the screen and they will make again a interference pattern, right? So diffraction is bending of light, and this rays of light which have bended due to obstacle, they will reach a screen and they will make a interference pattern. So bending plus interference, you will get another pattern which is diffraction pattern. तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इट विल नॉट लुक लाइक नॉर्मल इंटरफेरेंस पैटर्न. वो कैसा दिखता है मैं बताऊंगा आपको. ओके, तो ऐसा है कि यहाँ पे सेंटर में हमेशा ब्राइट स्पॉट बनेगा. तो दैट ब्राइट स्पॉट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा क्योंकि सेंटर में ऐसे सेंट्रल, और क्योंकि ब्राइट पॉइंट है तो इसलिए मैक्सिमा जो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी. यस, यू हियर मी राइट, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी. मतलब ये कि वो पॉइंट के अलावा कोई भी और पॉइंट जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा होगा दैट विल नॉट अपीयर एज ब्राइट एज द सेंट्रल पॉइंट. तो मैं ऐसा करता हूँ, बेटर फॉर मी विल बी टू शो एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ कि कैसे दिखेगा. इट इज गोइंग टू बी गुड थिंग. तो स्क्रीन का थोड़ा सा हम लोग विड्थ बढ़ा लेते हैं, तो you will also understand what is going to happen. So what is going to happen is this: center पे जो भी बनने वाला है that is going to be very bright. Okay, so you will get a bright central spot called as
सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। अब देयर इज सम अनदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो पहले तो सेंट्रल पॉइंट को मैंने नाम दिया है P0। देयर इज अनदर पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, जैसे वहां पे लिया था इंटरफेरेंस में, यहाँ पे भी वही लेंगे, सम अदर पॉइंट P। द थिंग इज, डिफ्रैक्शन का मतलब ही था बेंडिंग ऑफ लाइट। हमने कहाँ दिखाया बेंडिंग? नहीं दिखाया, अब दिखाएंगे। तो what happens is, I am drawing it in some other color just for the convenience. What happens is, the light, as soon as it encounters an obstacle or slit, मतलब diffracting system, A भी ये slit है मतलब diffracting system है, light will bend। तो light will bend, ये light का bending हो गया, right? हर एक पॉइंट से, जहां जहां, क्योंकि मैंने आपको बताया every point on this wavefront AB is going to act as secondary source, and every point is going to emit its own waves। तो हर एक पॉइंट से आप दिखा सकते हो, right? So we have shown here bending of light। ये लाइट है जो बेंड हुआ है at some angle theta, and there is one general confusion now। वो confusion इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये है कि बेंडिंग एक ही डायरेक्शन में क्यों दिखाया, नीचे क्यों नहीं दिखाया? हाँ, तो नीचे भी होता है, ओके, नीचे भी होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न जब मैं फाइनल ड्रॉ करूंगा तो आपको समझेगा, ऊपर और नीचे, मतलब सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे, इस केस में दोनों साइड पे डिफ्रैक्शन होगा। बट अगर मैं दोनों के दोनों एक ही डायग्राम में दिखाने गया तो देयर विल बी अ मेस। कौन सा रे कहाँ जा रहा है कुछ नहीं समझेगा। दैट्स व्हाई हम लोग एक ही डायरेक्शन में बताते हैं, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। बाय द वे, the angle with which the light has bent, that angle is called as angle of diffraction theta। ये theta है, तो that I will be showing later। हमको यूज करना है इस एंगल का। अब ये जो लाइट बेंड हुआ, ये जो रेज बेंड हुए, ये जो स्क्रीन पे जाएंगे एंड दे विल मीट पॉइंट P। तो दे विल मीट, दे विल कम ओवर समवेयर ओवर हियर एट पॉइंट P, okay? From all this they will reach point P। right। आर टास्क, हमारा टास्क ये है कि पॉइंट P पे क्या होने वाला है, मतलब ब्राइट पॉइंट दिखेगा मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा, या फिर डार्क दिखेगा मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा। बाय द वे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वर्ड नहीं यूज होता, डिफ्रैक्शन में यूज होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेंटर में मैक्सिमा है, मतलब सेंटर में ब्राइटेस्ट स्पॉट है, तो उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। उसके बाद अगर देयर इज नथिंग, लाइट नहीं पहुंचा वहां पे, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मिनिमा हियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल, नो, सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि प्राइमरी जो होता है यहाँ पे सेंट्रल, सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। तो ब्राइट के दोनों साइड में, सेंटर के ब्राइट के दोनों साइड में यू विल गेट मिनिमास, दोस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मिनिमास। फिर उसके बाद वापस ब्राइट मिलेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमास। तो मैथमेटिकली we will do in the next session। I am just explaining you कि what is going to happen, okay? Right, diagram समझ लो आज, and we'll use this diagram tomorrow also, maybe in the next session, or maybe I'll continue, I don't know, right? Anyways, what is important is this, as you remember कि P पॉइंट पे ब्राइट होगा कि डार्क होगा कि क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ, राइट? तो A से लेके, एक रे ए से निकल रहा है, सी से निकल रहा है, बी से भी निकल रहा है। तो ए और बी, मतलब दो एक्सट्रीम पॉइंट्स में से जो रेज आ रहे हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट में से जो रेज आ रहे हैं, उनका पार्ट डिफरेंस कितना होगा? तो उनका पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए याद रखना, किसी भी दो रेज में पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए यू ऑलवेज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन रे ऑन टू अदर।
तो मैंने ए से जो रे निकल रहा है और बी से जो रे निकल रहा है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ई. तो ये पॉइंट हो गया मेरा ई. तो पाथ डिफरेंस कितना है फिर बी ई, क्योंकि बी रे ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है एंड दैट ज्यादा पाथ एक्स्ट्रा पाथ इज बी ई. क्योंकि एक बार आपने एक रे से दूसरे रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उन दो पॉइंट से मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट के आगे देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस. इजी है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक रे ऐसा है, ओके दूसरा रे ऐसा है. फॉर एग्जांपल समझ लेना स्ट्रेट लाइन है. ओके व्हाट इज पाथ डिफरेंस. एक से दूसरे दूसरे रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस. अब ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है ई, इसके आगे तो रेज आर गोइंग टू ट्रेवल इक्वल पाथ, मतलब पाथ डिफरेंस कितना हुआ इतना बी. दैट इज व्हाट आई एम शोइंग देयर. मैं ये वहीं पे दिखा रहा हूँ. राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगल्स बिकॉज एंगल्स विल मेक important. Angle will be very important here for theory part. Right. So what we can do here is हमको already पता है about some angles. Okay. You already know that this angle is angle of diffraction, that is theta. The amount with which this bending. If this is theta, this is going to be 90 minus theta. थोड़ा समझ लेना. ये एंगल तो ऑलरेडी 90 है. क्यों ऐसा हो रहा है? आई एम गोइंग टू शो इट ओवर हियर टू यू इन सम अदर डायग्राम. सिचुएशन कैसा है हमारे पास? द सिचुएशन इज लाइक दिस. ये ए बी, देन you have this red light, red colored directly going from here. Then you have light which जिसका bending हुआ something like this. उसके बाद हमने एक perpendicular draw किया था A point से यहाँ पे. Okay. तो the angles involved where, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है यहाँ पे 90. क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे आएगा 90 minus theta. And since this is 90 minus theta, this angle is going to be theta because sum of angles of a triangle is 180 degree. So 90 minus theta plus 90 plus some angle x is equal to 180. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एंगल को x बोल देता हूँ. ठीक है. तो what we know is 90 minus theta plus 90, क्योंकि दूसरा एंगल 90 है, plus x is equal to 180. तो x is equal to theta ही आने वाला है आपके पास आफ्टर सॉल्विंग. तो ये एंगल थीटा बन गया. So this point was A, this point was B, this point was E over here. तो ये एंगल जो x लिखा है that is basically theta. Good, good. तो इतना आपको पता होना चाहिए. Because if you know this angle is theta here, ये एंगल अगर थीटा है ये पता होगा आपको, then you can use basic trigonometry and you can say what is sine theta. What is sine theta? Sine theta is opposite side PE upon hypotenuse is AB. ओके गुड. इससे क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि बीई क्या है? पाथ डिफरेंस है. ऑलरेडी आपको मैंने बताया है बीई इज पाथ डिफरेंस. सो व्हाट यू विल ऑब्टेन फ्रॉम हियर इज बीई इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. बट व्हाट वी नो इज बी इज पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को हम लोग कैपिटल डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ए बी जो है वो विड्थ ऑफ द स्लिट है, स्मॉल ए साइन थीटा. इतना आपको कम से कम आपका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ये इतना पता होना चाहिए. Now we can go ahead and discuss few more things. Then remaining part I will just take tomorrow, next session. देखो, the idea is this.
ए बी स्लिट पे हर एक पॉइंट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स, हर एक पॉइंट वो एक सेकेंडरी सोर्स है, वो अपना लाइट इमिट करेगा। अब सेंट्रल का जो पॉइंट है P0 वो ब्राइट क्यों आया, क्योंकि जो भी रे P0 पे पहुंचेगा दैट हैज ट्रैवल्ड इक्वल पाथ, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वो ब्राइट ही रहने वाला है बेसिकली, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर पॉइंट P, वो ब्राइट है या डार्क है, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ डिफरेंस। आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस में n lambda was the condition for path difference to get constructive, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये कंडीशन होता है मिनिमास का, मतलब द पॉइंट्स वेयर यू गेट नो लाइट दैट इज n lambda। डिफ्रैक्शन में जहाँ पे लाइट पहुंचेगा ही नहीं, मतलब मैं मिनिमास की बात कर रहा हूँ, the path difference to obtain minima is n lambda, whereas for interference it was for constructive, मतलब for bright light, for constructive interference। सिर्फ कंडीशन उल्टी हो रही है। अब अगर ऐसा याद रखोगे तुम तो कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होने वाला। इंटरफेरेंस याद रखो, उसके कंडीशन को उल्टा कर दो, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, मतलब मिनिमास, मतलब नो लाइट। अब ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफ यू पे अटेंशन ऑन दिस वेव फ्रंट ए बी, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, इट इज रिक्वायर्ड टू नो दिस, इट इज रिक्वायर्ड दैट वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ये आपका ए बी, ओके, देन पॉइंट ए, पॉइंट बी और सेंटर जो है पॉइंट सी। ऐसा इमेजिन करो अगर टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा है, क्योंकि मैंने एन लैम्डा लिखा ही था, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड सो ऑन। तो पहला कंडीशन है लैम्डा, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम ए एंड बी इज लैम्डा। ओके, नाउ यू नीड टू इमेजिन कि हमने पूरे वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए सी एक पार्ट हो गया और सी भी दूसरा पार्ट हो गया, राइट। व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, दो रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो एक रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, एक रे ऑफ लाइट आएगा ऊपर के सेक्शन से, ऊपर के हाफ से, और दूसरा आएगा नीचे के हाफ से, राइट, करेक्ट। इमेजिन, सर सोचो आप कि अगर एक रे ऑफ लाइट ए से निकल रहा है और एक सी से निकल रहा है, तो व्हाट इज बेसिकली द पार्ट डिफरेंस नाउ, लैम्डा बाय टोटल पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है, मतलब बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से जो रे आ रही है अगर उसका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो ए और सी में से जो रे आ रही है तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 किसका कंडीशन था, लैम्डा बाय 2 था कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव। इसलिए अगर टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा, मतलब इन जनरल n लैम्डा अगर है इन जनरल, राइट, टोटल ए और बी, एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ए और सी से जो आ रहा होगा या फिर सी और बी से जो आ रहा होगा उसका पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय 2। मतलब one ray is going from here, another is going from here, and they are interfering, so definitely they will interfere with a path difference of lambda by 2, that means you have a destructive interference, that means you have minima, right। then for every point, ये जो मैंने लिखा lambda 2 lambda 3 lambda या फिर path difference of lambda by 2, this is true for any point in the first half। AC जो अपर हाफ है उसमें अगर एक पॉइंट है जो लाइट इमिट कर रहा है, तो उसको करस्पॉन्डिंग पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 नीचे के हाफ में भी होगा। तो नीचे के हाफ में भी एग्जैक्टली लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस से वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये कि इन जनरल, इफ आई टॉक अबाउट इन जनरल, तो ए से बी अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो दैट विल गिव मी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। ये कंफ्यूजन का सोर्स कहाँ है, कंफ्यूजन का सोर्स ऐसा है कि हमने एक ही वेव फ्रंट को दो टुकड़े में बांट दिया,
ए बी वॉज अ सिंगल वेव फ्रंट, रिमेंबर हमने बोला लेट अस इमेजिन, अज्यूम कि इस वेव फ्रंट पे सेंटर पे एक पॉइंट है सी, राइट? नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस वेव फ्रंट इनटू टू पार्ट्स, ए सी अपर पार्ट एंड सी बी लोअर पार्ट. So if you talk about ray coming from A and B, मतलब extreme A से और B से, if the part difference is lambda, इसका मतलब A और C से जो लाइट आएगा उसका पार्ट डिफरेंस होगा लैम्बडा बाई 2. इसका मतलब ये कि one ray is coming from upper half, another is coming from lower half, so you have two sources. But what is the part difference now? Because you have divided it into two parts, so lambda by 2 हो गया. And if they interfere, lambda by 2 is the condition for destructive. So total part difference between extreme A and B, if it is lambda, then the part difference between A and C is lambda by 2. Hence you get the condition for destructive interference. Then ये तो फिर हर एक पॉइंट के लिए ट्रू है ना. आई कैन हैव अ पॉइंट इन द अपर हाफ विच इज सेकेंडरी सोर्स, उसके करस्पॉन्ड उसके लिए करस्पॉन्डिंग सोर्स एक नीचे के हाफ में भी होगा because every point on this wavefront is a secondary source, right? So in general what we say is this: total part difference from extreme A to B, if it is lambda, then you have destructive interference, then that is a condition for minima, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, right? All that mathematical part along with this diagram, complete diagram, will be continued in the next session because will take more than half an hour for me to complete everything now. So the idea for today's session was, मैं repeat कर रहा हूँ, the idea was today's session was just to give you a brief introduction to what is diffraction. तो मैंने बताया what is diffraction. एक अगर obstacle है और एक light source है, what we expect is कि वो जो obstacle है वो light को block कर देगा and there will be a region on the screen जहाँ पे light पहुँचना ही नहीं चाहिए, that is called as geometrical shadow region. But if the size of this obstacle is so small that it is comparable to the wavelength of light, then the light will bend around the corners of obstacle, corner पे ही bend होगा, and it will enter into geometrical shadow region, that is called as diffraction. ये same concept आप ऑब्स्टैकल की जगह पे ओपनिंग मतलब स्लिट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. देखो स्लिट मतलब बेसिकली देयर आर टू ऑब्स्टैकल्स व्हिच आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, तो लाइट विल बेंड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब लाइट विल स्प्रेड. So light will spread in case if you have a slit. Then overall what we are seeing कि diffraction के लिए, that is bending of light plus spreading of light into regions of geometrical shadow, that is diffraction. Diffraction के लिए we need just three things: source, diffracting system, and screen. If you place the source and the screen at infinite distance from the diffracting system, then that type of diffraction will be called as Fraunhofer diffraction. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए हम लोग लेंस का यूज करके लेंस को यूज कर रहे हैं. अगर सोर्स इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है, स्क्रीन इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब प्रैक्टिकली वेव फ्रंट्स शुड बी प्लेन वेव फ्रंट्स. स्पेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट पहुंचेगा, मतलब दैट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट. मतलब द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर Fraunhofer diffraction is that the wavefront falling on the diffracting system and on the screen has to be a plane wavefront. अब प्रैक्टिकली हम लोग स्क्रीन और सोर्स को इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं रख सकते, लेकिन वेव फ्रंट प्लेन चाहिए, तो दो लेंस लगा दिया, हो गया काम. Fraunhofer diffraction is, in this case, the only condition I told you is the distance. तो दूसरा टाइप का डिफ्रैक्शन जो है फ्रेस्नेल, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सोर्स एंड स्क्रीन कैन बी एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. इफ इट कैन बी एट फाइनाइट डिस्टेंस, you don't need to convert spherical or cylindrical wavefront into plane wavefront, so you don't need any lenses. तो हमने इसको यहाँ पे in terms of a comparison table लिख दिया है यहाँ पे. So we have a table of comparison over here. In this chapter, we are going to study in details what is Fraunhofer diffraction. Due to a single slit, हमारे पास एक ही slit है. We don't have like this kind of fingers, multiple slits. We have just one slit, just a slit, right? And all the details so far I have given you in this diagram कि क्या हो रहा है and what we are doing. In the next session, I will continue here onward. वापस से diagram draw कर लेंगे और वापस से समझ लेंगे कि what is going to happen. Okay, so for today is sufficient, and
please go through a little bit of theory that I have told you today, so that in the next session it will be easy for me to continue. नहीं तो लिंक बनाना पड़ता है, फिर उसमें 15 मिनट जाते हैं हमारे, right? Okay.